Now today we are going to learn about that's the outbreeding devices, right? New topic, that's which one? Outbreeding devices. First we have completed gametogenesis part. Second, gamete transfer, that we call here pollination. Now the third, that is the which one here? Outbreeding devices. Outbreeding devices, I told you majority flower are unisexual or bisexual? मेजोरिटी फ्लावर आर बट बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल इज द मेन नीड ऑफ दैट ऑटोगेमी. Still autogamy occurs rarely, right? Though the flower is bisexual, it promotes cross pollination by different ways. So that devices mechanisms we are going to learn today. Clear? So first, hermaphrodite flower. Hermaphrodite meaning? Hermaphrodite meaning? So her majority flowers are hermaphrodite, bisexual. Now, bisexual है, right? And if it produces it, that shows that autogamy, right? Bisexual and सिर्फ autogamy ही अगर इतने सारे flower species करते रहे, तो क्या होगा? No variations, right? And that leads to, in that, if in any species in that, at some level mutation occur, recessive genes are there, right? कुछ भी अगर disease के genes है, right? So that will further carried out from that parental to offspring to next generation, right? But वो cure करना है वहाँ पे. तो self, remember over here, self pollination, or other term here we call inbreeding. Either we call autogamy, or we call self pollination, or we call inbreeding, right? Inbreeding within that same species hai, but which one over here? Same flower also, right? Same species but same flower. Continuous, if this thing happen, autogamy, then it leads to after few generation sterility, right? वो reproductive fertility क्या हो जाता है? Decrease. That's why in humans also, right? You know that marriages occur between that close relatives or distantly related? Yes or no, right? This is the reason behind that over here, that genetic variations are there. Clear? Genetics chapter में और डिटेल में लर्न करेंगे कैसे पॉसिबल है, राइट? अगर कोई डिसीज जीन है डोमिनेंट रेसेसिव, तो कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, दैट वी विल लर्न इन दैट चैप्टर, right? So why these devices should be developed by the flowers, why they have developed actually? So to prevent what? Inbreeding depression. Continuous autogamy अगर हो रहा है generation after generation, continuous self pollination हो रहा है, that will lead to what? Inbreeding depression. Inbreeding depression meaning fertility power reduced. Clear? More number of flowers on a plant, more number of products, yes or no? More number of flowers, right? More number of products, because ultimately flower in that ovary is there, ovary converts into fruit, so products number increase हो जाएंगे, right? Now, so to discourage this self pollination and encourage cross pollination, right? Which one is needed? Outbreeding devices. Clear? First basic, outbreeding devices क्या है? Outbreeding devices promote self-pollination. True or false? False. Outbreeding devices encourage cross-pollination. True. Outbreeding devices discourage autogamy. True. Or self-pollination. True. Right? Now the next, first devices in your book given 4. First, second, third and fourth. This one hercogamy extra है, नीट के लिए mainly prepare करना है. Clear? Now here I have mentioned that particular name for each device. Again, not given in your book, NCERT book, but prepare these words for the NEET exam. Clear? So first device name is there. आप सोचिए that bisexual flower है, right? ऑटोगेमी के कौन से क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए थे? सिंक्रोनी फर्स्ट, राइट? सिंक्रोनी बिटवीन स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड पोलन रिलीज. नाउ द बाइसेक्सुअल फ्लावर इज देयर. आप सोचिए इन दैट कि अगर स्टिग्मा रिसेप्टिविटी हो गई है बट अगर पोलन ही नहीं आए, यस और नो, फ्रॉम द सेम फ्लावर,
एंथर नॉट रिलीजिंग व्हाट, पोलन, बिकॉज एंथर में पोलन्स कैसे अभी भी इमेच्योर. एंड यू नो दैट वी हैव डिस्कस दैट स्टिग्मा का एक पर्टिकुलर वायबल पीरियड ही होता है, तब तक ही वो रिसेप्टिविटी रहता है, देन इट विल लॉस्ट, राइट. सो ओवर हियर फर्स्ट डिवाइस नेम इज व्हाट, डाइकोगेमी. डाइकोगेमी मीनिंग आइदर फर्स्ट रिलीज पोलन, राइट, एंड पोलन का भी एक वायबल पीरियड होता है. सो फर्स्ट रिलीज पोलन एंड देन द स्टिग्मा गेट रिसेप्टिविटी. सी बाइसेक्सुअल है, बट क्या हुआ, सेम फ्लावर सेम पोलन आया यहाँ पे, सेम पोलन का पोलन ट्यूब डेवलप होगा, सेम फ्लावर है, सेम पोलन, राइट, मीन्स फ्लावर ऑफ द सेम पोलन ऑफ द सेम फ्लावर रीच टू द स्टिग्मा. दैट स्टिग्मा विल एक्सेप्ट, यस और नो? क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? रिसेप्टिविटी नहीं है, इमेच्योर है स्टिग्मा. समझ में आया, राइट. तो फर्स्ट पोलन रिलीज, पोलन का वायबल पीरियड भी लॉस्ट, देन द स्टिग्मा गेट्स रिसेप्टिविटी. क्लियर? सेकंड इज अ व्हिच वन, रिवर्स कंडीशन. फर्स्ट स्टिग्मा गेट्स रिसेप्टिविटी एंड देन पोलन रिलीज. तो आप बोलोगे फिर ये कैसे पॉसिबल है? On one plant so many different flowers are there, yes or no? एक प्लांट पे एक ही टाइम पे सारे फ्लावर्स आते हैं? नहीं आते ना. मान लो आज 1 नंबर यहाँ पे फ्लावर डेवलप हुआ और इसका कंडीशन डाइकोगेमी है, इसमें एंथर फर्स्ट रिलीज होता है या स्टिग्मा फर्स्ट रिसेप्टिविटी एंड पोलन रिलीज, लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट डे सेकेंड फ्लावर आ रहा है, थर्ड आ रहा है, इन दैट वे. तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा. विच वन? क्रॉस पॉलिन. फर्स्ट का जो पोलन रिलीज हो रहा है वो पोलन दैट मे बी रीच टू दैट सेकेंड, सेकेंड का जो है वो थर्ड पे, और एल्स नियर बाय कोई प्लांट है तो नियर बाय प्लांट के फ्लावर्स जो है मैच्योर हो गए, उसके पोलन सेम स्पीसीज के वहां पे आएंगे, राइट. सो दिस इज द डिवाइस वी कॉल डाइकोगेमी. either first pollen release and then stigma gets receptivity, or else first stigma gets receptivity and then pollen. That particular for one flower, right? तो एक ही प्लांट में 10 फ्लावर्स है, तो 10 फ्लावर में से मान लो 5 फ्लावर्स जो है जिसमें से एंथर रिलीजिंग प्रोसेस हो रहा है, तो बाकी जो है उसमें तब तक स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आ गया है, तो उसके पोलन वहां पे जाके क्या करेंगे, पॉलिनेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन. क्लियर? सो दैट डिवाइस वी कॉल विच वन, डाइकोगेमी. बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल? Though the flower is bisexual, but now due to development of this kind of dichogamy device, it promotes what? Cross pollination. Clear? Now just for your knowledge, dichogamy जहां पे first pollen androecium active हो जाता है, that we call protandry condition. Which condition? Protandry. Which condition? Protandry. Or one of the example for this sunflower. Sunflower do this, right? Sunflower do this. आप बोलोगे sunflower तो एक ही होता है. It's an what? Itself inflorescence. Bunch of flowers are there. Clear? Next one. Then other one. Here the first gynoecium part becomes active. Then the androecium. So this one we call protogynetum. Which one? Protogynetum. Proto first. First which one gets activated? Androecium. Androecium, that is for which one? Androecium. So first pollen release. Protogyne. Gynoecium. First stigma gets receptivity. First device clear है? Yes or no? Second device name heterostyly. Very easy. Diagram से कुछ समझ में आ रहा है? Heterostyly, don't consider only that style portion, but that due to that style and filament length, right? Stigma and anther occupy at different positions. Anther यहाँ पे है, filament size short, but style, right, long is there. Stigma over here, pollens can reach over here. Against the gravitation जाएंगे? नहीं, right? Pollens cannot sit over here. So in certain species, right, this condition is there. That is the which one? Heterostyly. Which one? Heterostyly. Heterostyly meaning length of the filament and length of the style will be different, right? Generally stigma, that the style elongated and filament
shorter. Understood? The length vary. Again, it's a bisexual, but flower bisexual or unisexual? Bisexual. But now it promotes what? Cross pollination, right? Next one, hercogamy. Hercogamy का meaning होता है physical barrier, right? Which one? Physical barrier. If you have that, see that pea flower, bluish color maxillary aestivation, yaad hai? One large petal that we call standard. Then two wings, another name. Wings, another name. LA, right? And under that, and फिर वहां पे अंदर हमें क्या मिलता है? That androecium, gynoecium, other part, right? Due to this petals arrangement in this different way, यहाँ पे भी between that androecium means the stamen, anther, and gynoecium, stigma part mainly, the petals come between them. यहाँ पे androecium है, यहाँ पे gynoecium है, बीच में क्या आ जाता है? Petals, right? तो it's like a curtain, it's like a barrier. Barrier जहाँ पे form होगा physical barrier, we call hercogamy. Clear? Mechanical barrier or physical barrier between anther and stigma, which device? Hercogamy. अगर positions different हो गए तो heterostyly. Barrier comes. Stop writing. Stop writing. Close your book. When physical barrier is there, then hercogamy, right? Physical barrier, hercogamy. Positions different, heterostyly. Clear? Now next one, self incompatibility. Incompatibility meaning not suitable, right? So can you able to understand by yourself this? कौन सा pollen incompatible है? The pollen of same flower, bisexual, genetic mechanism होता है. Not in all flowers, all plants, in certain plants. Genetic mechanisms are there. कि अगर एक ही flower, देखिए maturity दोनों का same है, synchrony भी same है. Maturity meaning what? Synchrony. Pollen release हो रहा है, stigma gets receptivity. Though that it's follow the which one? Cross pollination. कैसे? So in that, अगर same flower का pollen आया, this pollen will not accepted by stigma, right? Stigma check this thing. कि this is the same pollen, different pollen, same species का है, different species का है, and then allow the growth of pollen tube. Clear? So first pollen of the same flower that we consider incompatible, and second different flower but again different flower of same plant, right? तो almost autogamy and geitonogamy तो नहीं होगा यहाँ पे, but this one help promotes what? Xenogamy. समझ में आ रहा है? ये तीन words इसीलिए बोल रही थी, क्या prepare कीजिए, auto, geitono and xenogamy, right? Pollen of the same flower if sit and form pollen tube, it shows what? Autogamy. This one is which one? Autogamy. Pollen of the different flower but same plant, geitonogamy. But अगर वैसे pollen आए तो क्या बन जाएंगे? Incompatible. That pollen cannot be formed pollen tube, right? So which pollen form the pollen tube? Meaning same species, different flower, different plant, right? Same species, different flower, different plant. वो pollen अगर यहाँ पे आ गए stigma पे, allow the growth of pollen tube. Clear? So remember this definition, which pollens consider as a self incompatible. Which pollen consider as a self incompatible? Which one? Either pollen come from same or different flower but same plant. वो incompatible है. Incompatible pollen आएगा तो pollen tube growth? No, stigma will not allow this. Clear? Next, so inhibiting the pollen tube growth, it's a genetic mechanisms that genes are present in that plant that do this thing. Clear? Next one, dicliny or diocy. इसका meaning है production of unisexual flower. Production of which one? Unisexual flower, right? जैसे हमने पपाया का मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि hermaphrodite variety भी है and unisexual, bisexual भी है as well as which one?
यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल ओरिजिनल, उसमें से यूनिसेक्सुअल इवॉल्व हुए हैं, राइट? यूनिसेक्सुअल क्या हुए? इवॉल्व। क्लियर? सो डाइक्लिनी मीनिंग फ्लावर ही कैसे बना दो? यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल है तो चांसेस आर देयर फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, बट अगर फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हो गए, फ्लावर्स आर unisexual, then we call cross pollination. Pollination takes place between two different flowers, that is cross pollination. It can be of same plant, it can be of different plant. Clear? Same plant वाला cross pollination को क्या बोलेंगे? Geitonogamy. And different plants xenogamy, right? So now very very important this device for all exams, right? नीट के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस थिंग, राइट? नाउ सी दैट प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल, डाइक्लिनी का मीनिंग ही क्या है? प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, राइट? इन दैट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन मेल फ्लावर्स एंड द विच वन? फीमेल. हियर द मेल फ्लावर्स, हियर द फीमेल फ्लावर्स. दे आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट. ऐसा कोई एग्जाम्पल किया था? याद है आपको? मेज, कॉर्न, राइट? मेज इन दैट दिस अरेंजमेंट इज देयर. Male flower at the top, female flower at the bottom, right? So from this anther, pollen can reach to that stigma of different flower but same plant, right? So this thing prevents autogamy, yes or no? This thing prevents autogamy but not Geitonogamy. This one promotes what? Geitonogamy, right? This one promotes what? Geitonogamy. And prevent ये लाइन का MCQ आता है में, right? When pollination takes place between two different flowers, but they are located on same plant, it can prevent but not Geitonogamy. Concept clear है? Examples are given. One of them is a maize, other is a castor, right? Castor and other is a which one? Maize. Clear? Next, पपाया का जो हमने xenogamy के लिए किया था, मेल फ्लावर on one plant, female flower on another, right? So this one prevents what? Autogamy होगा इसमें? See, यहाँ पे एंथर है, सॉरी, यहाँ पे एंथर है, then stigma style ovary. Pollen, that pollen reach to the stigma of same flower or different? Same plant or different? So this one is xenogamy. Prevent what? And Geitonogamy both. So in papaya, remember in papaya that xenogamy promote or prevent? Xenogamy promotes. Prevents what? Right? Now, so papaya plant monoecious है या dioecious? Plant बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है वर्ड? papaya plant बोल रही हूँ. Plant is which one? Dioecious. Flowers dioecious, unisexual. Maize में flowers क्या होते हैं? Maize में flowers dioecious meaning sexes are separated, unisexual, right? मेज प्लांट कैसा होता है? मोनोशियस. रीड द क्वेश्चंस, राइट दैट गिवन क्वेश्चन केयरफुली. फ्लावर के लिए पूछ रहे या प्लांट के लिए? राइट? मेज प्लांट इज मेज फ्लावर इज कैस्टर फ्लावर इज कैस्टर प्लांट इज papaya plant is papaya flower is papaya flower can prevents but promotes which outbreeding devices we can observe in case of castor? Which one? Dichloeny. That's the production of unisexual flower. Understood this? Yes or no? Right? So this is the entire topic for outbreeding devices. Clear? You know calotropis, yes. Right? Calotropis in that this position is there. This mechanism is there. Heterostyle, right? उसके स्टाइल जो स्टिग्मा है and the anther का उसमें ये कंडीशन मिलता है calotropis में, right?